about the inseparable articles. पिछली क्लास में हमने inseparable article के बारे में पढ़ाई की है. Today we are going to start with interrogative है. आज हम प्रश्न पूछने वाले है के साथ में शुरू करेंगे. But as this rules requires repetition, I will just revise this all rules about the articles in just 2 minutes. अभी जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं ये बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए एक बार इनको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं. General rule is hey with pathak and doubling the agesh in the first root letter. सबसे पहला नियम है पैथैक के साथ में हे अक्षर जुड़ जाएगा और उसकी वजह से उसके तुरंत बाद में आने वाले अक्षर में डबलिंग दागेश लग जाएगा. Amalek, Hakol, Hayom, Hashem, Halayla, Habrit. So all these examples you will find that in the first root letter doubling dagesh is there. ये जितने भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं उन सब में आप देख सकते हैं कि हे के साथ में पैथैक लगा हुआ है और शब्द का शुरू होने वाला सबसे पहला रूट लेटर जो होता है उसमें डबलिंग दागेश लग चुका है. And it is very important to note down that the first root letter is non-guttural. और सबसे पहले ध्यान में देने वाली बात यह है कि सबसे पहला रूट लेटर जो है गटरल नहीं है. I request all of you to please start your videos. Put your videos on. I'm having a little issue with putting on the video, so I may not be able to switch it on. Excuse me for that. Rule number 2, attached inseparably to a weak guttural with comets and no dagesh. दूसरा नियम ये है कि जब किसी भी गटरल के साथ जुड़ता है तो उसमें कॉमेट्स लगेगा, लेकिन गटरल में कोई भी दागेश नहीं लगेगा. Because its property of guttural, it refuses doubling dagesh. क्योंकि कायदा से कोई भी गटरल में डबलिंग दागेश नहीं लगता है. Instead of pathak, it is heightened to comets for weak guttural. इसीलिए पैथैक की जगह हे के साथ में कॉमेट्स लगा है और वीक गटरल्स में कोई भी दागेश नहीं लगा रहा है. Now you can observe here that the first root letter is a weak guttural. यहाँ पर गौर फरमाइए कि सबसे पहला रूट लेटर जो है शब्द का वो वीक गटरल है. Aleph, Ain and Resh. अलेफ है, आइन है और रेश है. Rule number 3 we saw is hey with pathak and no doubling dagesh for strong gutturals. अब तीसरे नियम के मुताबिक कोई भी स्ट्रॉन्ग गटरल अगर है जैसे खेत है और हे है तो उसमें हे के साथ पैथैक ही लगेगा और कोई दागेश भी नहीं लगेगा. Rule number 4 for unaccented hey with comets, ain with comets and khet with comets, article is pointed with hey with segol. और चौथा नियम ये है कि जब भी हे आइन या खेत के साथ में कॉमेट्स जुड़ा हुआ है तो उसके साथ में सेगोल लगेगा और डबलिंग दागेश भी नहीं लगेगा. And rule number 5 we saw for accented hey with comets and ain with comets. So article is pointed with hey with comets and no dagesh.
और एक्सेंटेड जब भी गटरल आ रहा है यहाँ पर हे विथ कॉमेट्स या फिर आइन विथ कॉमेट्स है, तो यहाँ पर आर्टिकल जो है उसके साथ में कॉमेट्स लगेगा और कोई दागेश नहीं लगेगा. So last time I gave you assignments that you have to solve 30 examples about the article. आर्टिकल वाले 30 एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट दी गई थी, किस किसने पूरी की है? We'll take some more examples on articles so that it will be clear, very clear to you. Okay, now you can unmute and tell me. Now this zot is this word. So according to rules, which rule can be applied here? इस शब्द के लिए कौन सा कायदा, कौन सा नियम लागू हो सकता है आर्टिकल लगाने के लिए? Rule number 1. Hey with Hey with pathak and doubling the agesh in the first root letter. Then gezarim or gezarim. Again, rule number 1. Hey with pathak and doubling the agesh already hai. I request everyone to participate. Shamaim. Again, rule number 1. Hey with pathak. Rule doubling the number agesh 1. already hai. 1. It. Rule number 2. Weak guttural hai. So hey Guttural. with comets. Comments. Height. Then nahar. Rule 1. Rule number Hey 1. with pathak. One. Hey with pathak. RH. Rule number 2. Weak guttural hai, so hey with comets. RH. Then Rule number 1. Pigarim. Pigarim. 1. Hey with Yes. pathak. Pathak. Or Rule number 2. Hey with comets. because it is Weak guttural. weak guttural. Weak guttural. Our Maim. Rule number Maim. 1. Maim. Yes. Rule number 1. 1. Hey with 1. pathak. Have with pathak. Hemesh. Rule number 1. Rule 1. Hey with pathak. Sipfor. Rule number 1. Hey with pathak. And Koshek. Hey with Hey with rule number 3. pathak. Strong guttural. With Pathak. Pathak. Or Rule number Rule 1. 1. Hey with pathak. Romeshet. Rule number 2. Rule number 2. Hey with comets. Hey Weak with guttural. Devarim. Rule number 1. Hey Rule with number 1. pathak. Now this Dagesh in Dalit is Dagesh Lene as well as Dagesh Forte. Yes. Gedolim. Yes. Rule number 1. Hey with pathak. Hey. Phone. Yes. Strong Number guttural. Rule number 3. Hey with Hey pathak. with pathak. Dagesh is not there. Huh? That is by mistake. Okay. This already we did it. Devarim. Khutsa. Rule number 3. Hey with Rule number pathak. 3, Strong hey with guttural. Kadol. Rule number 1. Hey with pathak. 1.
Elle, Rule number 2, a weak guttural, He with comet. comets. Comets. Okawin, Rule number 1, he with pathak with doubling tagish. Rule number 3, he with pathak, strong guttural, he. you can see here, et hakweni, et ha kwenetzi, et ha wadmoni, et ha kitti, et ha perizzi, et ha Rephaim, Ve'it ha Emori, Ve'it ha Kenani, Ve'it ha Girgashi, Ve'it ha Ebusi. So you can see in this 19, 20, and 21 verses of Genesis 15, you can find according to the root letter, this rule is applied over here. Okay, so today we are going to start interrogative hey. आज हम सवाल पूछने वाला अक्षर जो है हे के साथ में शुरू करेंगे. Normally in English, we ask the question at the end of the word. अक्सर इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो सवाल या चिन्ह जो है आखिर में आता है. But in Hebrew, we have to put that question mark at the beginning of the word. लेकिन इब्री भाषा में सवालिया शब्द जो है शुरू में डाल दिया जाना पड़ता है. Normally, it makes interrogative sentence when we put hey with khatib pathak. अक्सर हे के साथ में खतफ पताक जब लगाते हैं तो वो सवाल हो जाता है. Hashamar and hello shamar. Now, what is the meaning of shamar? He kept watch. Yep. So when we put interrogative hey with khatib pathak, it will become hashamar, that is, has he kept or will he keep? And hello shamar is, has he not kept, will he not keep? यहाँ पर जो हम यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, शमैर का मतलब रक्षा करना एक तरह से हिंदी में. तो यहाँ जब बोला जा रहा है हशमैर, यानी कि क्या उसने रखवाली की, और हल्लो शमैर जब बोलते हैं कि क्या उसने नहीं किया, ऐसे ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे हे के साथ में खतफ पथक जुड़ने की वजह से. So here last time we saw Hashomer Akhi Anokhi, am I my brother's keeper? जैसे यहाँ पर काइन और अबेल के साथ में जब परेशानी हुई और यीशुआ ने पूछा कहाँ है, तो उसने कहा था हशोमेर अनि अनोखी, यानी कि यहाँ पर क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ. This Khatib Pathaks makes interrogative sentence. जब भी किसी शब्द के साथ में खतफ पथक जुड़ा है तो उसका मतलब वो सवाल पूछ रहा है. Rule number 2, attached inseparably to a word beginning with guttural or shiva with pathak. जब कहीं भी कोई शब्द गटरल या शिवा के साथ शुरू होता है, वहां हे के साथ में
पैथेक लगता है. Now, it should not be confused with article rule number 1 and 3. यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आर्टिकल में भी है के साथ में पैथेक लगता है. नियम पहला और तीसरा उसके साथ में कंफ्यूज नहीं होना है. First thing you have to see whether the in first root letter, if it is non-guttural, first root letter there is a doubling dagesh or not. अगर कोई भी शब्द की शुरुआत में पहला रूट लेटर जो है वो गटरल नहीं है तो फिर उस शब्द के अंदर डबलिंग दागिश है या नहीं इसको जांच लीजिए. अगर डबलिंग दागिश नहीं है तो इसका मतलब ये सवालिया चिन्ह है. If it is not doubling dagesh, then it is interrogative hai. अगर कोई भी रूट लेटर के अंदर डबलिंग दागिश नहीं है तो इसका मतलब ये यहाँ पर सवालिया है, आर्टिकल है नहीं. Now you know that for strong guttural, he with pathak and no doubling dagesh is used for article. आर्टिकल के लिए जो नियम है वो इस नियम से बहुत अलग है. स्ट्रॉन्ग गटरल के लिए है के साथ में पैथेक लगता है. And there should be strong guttural, that is he and khet. और अगर स्ट्रॉन्ग गटरल है और खेत तभी. Now here you can see aleph is there and there is he with pathak is there. यहाँ ध्यान दीजिए अलेफ भी है और साथ में है के साथ पैथेक लगा हुआ है. Ha atta. है अता. What about you or how are you? यहाँ So- पर सवाल पूछ रहा है कि कैसे हो, तुम कैसे हो. So this you have to remember that whether it is if it is a weak guttural, then you can identify that this is interrogative he. अगर यहाँ पर वीक गटरल है तो पता चल जाएगा कि ये सवालिया है. But if there is a strong guttural, then how will you identify that whether it is article or whether it is interrogative he? अगर इसकी जगह स्ट्रॉन्ग गटरल है तो कैसे पता चलेगा कि ये सवालिया है या आर्टिकल है. Because rule number 2 says that attached inseparably to a word beginning with guttural. So it is not said that whether it is strong guttural or weak guttural, beginning with guttural. If it is beginning with strong guttural also, then he with pathak will be attached for interrogative he. अगर यहाँ पर जैसे नियम बता रहा है कि कोई भी गटरल यहाँ किसी तरह से स्ट्रॉन्ग या वीक गटरल के बारे में नहीं कहा गया है, इसीलिए गटरल स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो उसके साथ में सवालिया तौर पर है के साथ पैथेक ही लगेगा. So only by context you will come to know whether it is article or whether it is interrogative he in case of strong gutturals. इसीलिए जब भी स्ट्रॉन्ग गटरल हो तो आपको पूरा वाक्य पढ़ करके समझ में आ जाएगा उसके आधार पर कि ये सवालिया है या आर्टिकल है. Otherwise it is difficult to identify. वरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. Rule number 3 for interrogative he is attached inseparably to a word beginning with gutturals and comets with segol. अब तीसरा नियम ये बताता है कि जब कभी किसी भी गटरल के साथ में कॉमेट्स लगा हो तो उसके साथ जुड़ने वाले सवालिया है पे सेगोल लग जाएगा. Now you have to remember this statement for all these three things, whether it is article, interrogative he or whether it is interrogative pronoun. For all these three, if the guttural starts with comets, then it is pointed with he with segol. तीनों ही तरह पे तीनों ही किस्म के यानी कि आर्टिकल के लिए हो चाहे इंटरोगेटिव के लिए हो चाहे प्रोनाउन के लिए हो, जब भी किसी भी
गटरल के साथ में कॉमेट्स लगा है तो हे के साथ में सेगोल ही लगता है. You have to remember it and mark it in your memory that guttural with comets, then hay with segol. इसको अच्छी तरह से जहन में फिट कर लीजिए कि जब कभी भी गटरल के साथ में कॉमेट्स हैं तो हे के साथ में सेगोल ही आता है. Now for article, we saw that for unaccented guttural with comets, we attached hay with segol. अब आर्टिकल में जब हमने देखा तो नियम ये कहता है कि गटरल विद कॉमेट्स अगर है तो वो अनएक्सेंटेड होगा, तभी हे के साथ में सेगोल लगता है. Now, how will you distinguish between article rule number 4 and interrogative hay rule number 3? अब फर्क कैसे करोगे आर्टिकल के लिए जाने वाले चौथे नियम में और इंटरोगेटिव है के नियम 3 में? First of all, you have to see whether it is accented or unaccented. सबसे पहले जांच लीजिए कि गटरल जो आ रहा है वो एक्सेंटेड है या एक्सेंटेड नहीं है. For that, I will take you to the article slide number 4. Now you can see here, attached inseparably to an unaccented hay with comets and ein with comets and always khet with comets with segol and no dagesh. This is the general route for article for unaccented. अब यहाँ पर देखें कि आर्टिकल का जो हम नियम देख रहे हैं कि जब कभी भी हे के साथ कॉमेट्स हैं, आइन के साथ कॉमेट्स हैं या फिर खैत के साथ कॉमेट्स लगा हुआ है तो यहाँ शब्द में वो अनएक्सेंटेड है, तभी हे के साथ में सेगोल लगा है और गटरल में कोई भी दागेश नहीं लग रहा है. Now, in rule number 3, over here also attached inseparably to a word beginning with guttural and comets with segol, but here the condition is not given whether it is accented or unaccented. और यहाँ पर जो तीसरा नियम हम इंटरोगेटिव को लेकर के चल रहे हैं तो ये नहीं कहा गया है कि गटरल जो है एक्सेंटेड हो या अनएक्सेंटेड हो. And you know that we do not find ole, so last syllable is accented over here. अब यहाँ पर ओले नहीं दिया हुआ है. ओले एक मार्कर है, हम जान रहे हैं कि ओले अगर है तो इसका एक्सेंट दूसरे वर्ड पर आएगा, लेकिन जब एक्सेंट नहीं है इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो आखिरी वाले हिस्से में जा रहा है. Next to the last syllable is unaccented, we know. इसीलिए यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि आखिरी वाले सिलेबल के ऊपर एक्सेंट जाता है. And next to the last syllable is unaccented. और उसके पहले वाला हिस्सा जो है वो अनएक्सेंटेड है. Here also article number 4 and interrogative है number 3 we can know by context. यहाँ पर भी हम जब जो बोला जा रहा है वाक्य उसके साथ में चल करके ही पहचान सकेंगे कि ये क्या यहाँ पर. For example, in reading if you find hay with segol and the word, then you have to read the whole sentence and you have to understand whether that is article or whether it is interrogative hay. इसलिए अब जब भी इस तरह के शब्द कोई आए तो आप पहले पूरा वाक्य पढ़ लें, क्योंकि वाक्य पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सवालिया तौर पर पूछ रहा है या फिर ये आर्टिकल लग रहा है. Here the word is he khata. He khata. Khata means sin. यहाँ पर खता मतलब गुनाह होता है, पाप होता है. यहाँ शब्द पढ़ा जा रहा है हे खता. What is my sin or what sin? यानी कि इसका मतलब है कौन सा गुनाह, मेरा क्या गुनाह है. You have to remember that it should be identified by context. इसीलिए हमेशा पूरा वाक्य पढ़ने और समझने के बाद ही पता चलेगा कि सवाल है या आर्टिकल. Also, हे अवैध.
Okay. So for interrogative है, only these three rules are there. तो सवाल पूछने वाले है के लिए 3 ही नियम लागू होते हैं। Normal rule is है with खाते patak. सबसे पहला नियम है के साथ में खाते पैथाक लगेगा। If the word begins with Shiva or guttural, then we have to attach है with patak. कोई भी शब्द गटरल या फिर शिवा से शुरू होता है तो है के साथ में पैथाक लगेगा। Third rule is when guttural is attached with comets, then है with segol. और तीसरा नियम है जब कभी भी गटरल के साथ में कॉमेट्स लगा है तो है के साथ में सेगोल लगेगा। So we have covered articles, we have covered interrogative hey, and now we are going to see about the interrogative pronoun. अभी हमने आर्टिकल पढ़ा है, सवाल पूछने वाला है पढ़ा है, अब हम सवाल पूछने वाला प्रोनाउन सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। Interrogative pronoun is of two types. There are two types of interrogative pronoun. सवालिया सर्वनाम 2 तरह का होता है। And in Hebrew, it is used to introduce question. और इब्री भाषा में वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। For personal pronoun, me, the personal pronoun is used with me. और किसी भी व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल होता है वो है मी। Show you for that. Now, there are two types of personal pronoun in Hebrew. The first pronoun is used for person. इब्री भाषा में 2 तरह के सर्वनाम इस्तेमाल होते हैं और पहला वाला जो है व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। Everyone say me. Me. Me means who. मी का मतलब होता है कौन। It can also be used for whom. किसके लिए ऐसा पूछने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। Who is used for subject and whom is used for object. और जब कभी भी सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है तब उसका मतलब कौन होता है और जिसके ऊपर काम हो रहा है एक्शन यानी कि क्रिया जिसके ऊपर हो रही है तब उसके लिए whom यानी के किसके लिए ऐसा इस्तेमाल हो जाएगा। I have to remember that this form me is indeclinable, means it never changes. और मी जो है वो कभी भी नहीं बदलता है। So unlike article and interrogative है, this me never changes. आर्टिकल या No declension है takes place. या है के जैसे बदलाव है वैसे मी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कौन के लिए भी मी होगा, किसके लिए भी मी ही होगा। And it is always used in reference to person, not for things. मी हमेशा व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल होगा, किसी भी वस्तु के लिए नहीं। To remember that this wherever in biblical Hebrew you will find in Tanakh, me is used. The meaning should be who or whom. तनाख में देखा गया है कि जहां कहीं भी मी का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब कौन या किसके लिए होता है। It's very simple. We are going to see the rules about the ma, that is used for things. अब चीजों के लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल होगा वो है मैं, उसके बारे में हम नियम देखने जा रहे हैं। Now this ma
is used, this second interrogative pronoun ma is used for things. Now this ma is used for things, ma or ma. वस्तु के लिए जब इस्तेमाल होता है तब वो मैं होगा या माँ होगा. Meaning is what or how. इसका मतलब होगा क्या या फिर कैसे. And the rule for using this ma is similar to article rule. और इसके ऊपर लागू होने वाले सारे नियम जो है आर्टिकल के नियम से मेल खाते हैं. For example, and this ma is used with makef and without makef. This red color line which I write here, this line is called makef. और माँ के साथ में ऊपर की तरफ जो लाल रंग की डंडी लगाई हुई है उसका नाम है माकेफ. और माँ या मैं जो है माकेफ के साथ या फिर बिना माकेफ के भी इस्तेमाल होता है. Whenever a word is attached with makef, it is considered as one word. और जब भी माँ के साथ में कोई शब्द जुड़ा है माकेफ के साथ तो उसको पूरा एक शब्द समझा जाएगा. When it is without makef, then it is separate word. और जब बिना माकेफ के हैं तो इसका मतलब वो अलग शब्द है. But if it is with makef, then it is considered as one word and accent will move to the last syllable. और जब माँ के साथ में माकेफ के साथ में कोई शब्द जुड़ा है तो फिर वो एक शब्द माना जाएगा और एक्सेंट जो है सब शब्द के आखिरी सिलेबल पर चला जाएगा. This, attaching this interrogative pronoun is also having 3-4 rules. इसके भी लगभग 3-4 नियम है. Very similar to article rule. Now the general rule is it is attached before the non-guttural with or without makef, and there should be a doubling dagesh in the first root letter. जब भी मैं किसी भी शब्द के साथ में जुड़ता है माकेफ के साथ हो चाहे बिना माकेफ के हो तब उस पहले रूट लेटर में डबलिंग दागेश लग जाता है. To remember that the first root letter there will be doubling dagesh and it is pointed with pathak. Mem is pointed with pathak. यहाँ पर मेम के साथ में पैथैक लगेगा और पहले रूट लेटर में डबलिंग दागेश लगेगा. Ma-ze means what is this? What about this? मैजे मतलब ये क्या है. Okay, so this is rule number 1. Rule number 2, if it is preceding the guttural, that is aleph, then hey, ain, or resh. If it is preceding the guttural, then it is pointed with ma and no doubling dagesh. जब भी ये आलिफ है आइन या रेश से शुरू होने वाले शब्द के साथ जुड़ेगा तो मेम के साथ में कामेत जाएगा और आलिफ या जो भी गटरल होगा उसमें डबलिंग दागेश नहीं लगेगा. Example is ma ata. यहाँ पर उदाहरण है मा अता. Now,
before in order to understand what I will do, I will remove this hey. I can say here for weak guttural. For weak guttural, it is pointed with unlike article, like article, it is pointed with mem with comments. अभी हम समझने के लिए ऐसा जान लेते हैं कि वीक गटरल के साथ में जब मैं जुड़ता है तो वहां पर कॉमेट्स लगेगा. Because for hey, the word beginning with hey, there are some exceptions and they are given in your workbook. और हे से शुरू होने वाले कुछ ऐसे भी शब्द है जो अपवाद है और वो आपके वर्कबुक में दिए गए हैं. For example, in number 13 and 19 in your workbook, that example is given, number 13 and 19, Mahaarits. देखिए, अगर सबके पास वर्कबुक है तो खोल करके देखिए, यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है आपके साथ में, तो वहां लिखा है Mahaarits. That's why in your workbook, rule number 2C, that hey is given and over that they have pointed number 81. और यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 81 लिखा गया है इसके साथ में, जहां पर अलेफ, हे, आइन और रेश के बारे में लिखा गया है. Because there are some exception, although it is not a weak guttural, hey is not a weak guttural, it is pointed with comments, mem with comments, that is ma. यहाँ पर हे वीक गटरल तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखा गया है कि उसके साथ में माँ जोड़ा गया है. You have to consider it as an exception. ये अपवाद है. Rule number 2 is for weak gutturals. इसीलिए ये जो दूसरा नियम बताया गया वो वीक गटरल्स के ऊपर लागू होगा. Rule number 3 is for strong guttural. Which are the strong gutturals? A and Khet. Khet. What is the rule for article? A with pathak and no doubling dagesh. Correct? Yes. So here also we have to use ma, that is mem with pathak and no doubling dagesh, whether we use with makep or without makep. Ma, he. Preceding the harsh guttural, that is he or khet. जब है या खेत, ये जो स्ट्रॉन्ग गटरल्स है, इनके साथ में ये जुड़ता है तो मेम के साथ में पैथैक जाएगा और वो होगा मैं. जैसे यहाँ उदाहरण में दिया गया है मैं, ही. Now you can observe over here that this first root letter is a strong guttural. इस शब्द में सबसे पहला रूट लेटर जो है स्ट्रॉन्ग गटरल है. It is pointed with pathak and no इसीलिए doubling मेम के dagesh. साथ में, इसलिए मेम के साथ में पैथैक लगा है और हे में कोई डबलिंग दागेश नहीं लगता है. Okay, so ma, he means she. In Hebrew, he means she. यहाँ पर हिब्री भाषा में ही का मतलब वो होता है, यानी कि महिला. Translation is what about her, or what she is doing. According to the context, there may be many translations. यहाँ पर काफी ज्यादा अलग तरह से ट्रांसलेशन हो सकते हैं कि वो क्या है, वो कौन है, ऐसे भी सवाल हो सकते हैं. It's feminine, so he means she. So what about her, or what about she? So it is feminine gender. ही स्त्रीलिंगी के लिए इस्तेमाल होता है. कोई भी शब्द स्त्रीलिंगी जब होगा तो उसके लिए ही इस्तेमाल होता है. Question will be what about her? सवाल हो सकता है कि उसके बारे में क्या, या वो क्या है.
Rule number 3, and last rule, rule number 4, is preceding guttural with comets. Guttural with comets. With comets. For guttural with comets, what we saw about the interrogative hey and article rule, which pointing is used? Segol. So it will be here may. May. Now this guttural is fine. May Ashita. जब किसी भी गटरल के साथ में कॉमेट जुड़ा होता है तो ऐसी सूरत में मेम के साथ में सेगोल जुड़ेगा और वो मे हो जाएगा, जैसे उदाहरण में दिया गया है मैं असीता. Now this form can be used with markup or without markup. अब यहाँ पर मार्केट के साथ या बिना मार्केट के भी इस्तेमाल हो सकता है. On your workbook, they have given in 4C 82 number where the explanation is given. There are also some exception for this rule. और इस नियम के लिए भी कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद हैं. Genesis यहाँ point 2010. नंबर 82 में दिया गया है. Genesis 2010, it is given ma raita. जैसे यहाँ नोट में दिया गया हुआ है 82 नंबर के पॉइंट में लिखा है जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति के 20वें बाब में 10वीं आयत में लिखा है मा राइता. What do you see? क्या देख रहे हो? So Judges 14:18, they have given may as. और जजेस यानी कि I wouldn't know that. Sorry. जजेस के 14वें बाब में 18वीं आयत में लिखा है may as. So it is used without comments. यहाँ पर कमेंट्स के First बगैर root letter is without comments. यहाँ गटरल आइन जो है उसमें कमेंट्स नहीं है. We are strictly following workbook because although there are rules in Hebrew, there are some exceptions. बेशक हम जानते हैं कि नियम लागू होते हैं लेकिन इन नियमों के लिए भी कोई अपवाद है. There is perfect harmony in rules, but there are 1 or 2 exceptions you will find always. अक्सर देखा गया है कि सारे नियम सब पर लागू होते तो हैं, कहीं एक्सेप्शंस होते हैं. The word Yahweh is exception. जैसे शब्द यावे जो हैं उस पे कोई नियम नहीं बैठेगा. For example, we'll see in preposition also Lelohim or Elohim. यहाँ हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि जब उसके साथ में प्रपोजिशन लग जाता है तो उसके लिए एलोहीम बदल जाकर के लेलोहीम होगा. For Yahweh and Elohim also there are some exceptions. The rules will not follow there. यहाँ पर यावे और एलोहीम के लिए कई बारी नियम लागू नहीं होंगे. There are some words. For example, we saw in articles there are 4 words where you will find exceptions about the rules. कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर नियम लागू नहीं हो पाते हैं. Better understand that if you read workbook. और इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर आप वर्कबुक को बार-बार पढ़ेंगे. Once again, rules about the interrogative pronoun ma. I will put it before you and we will take some example, more example. Rule number 1, ma attached by pathak with or without markup and dagesh to the non-gutturals.
सबसे पहला नियम ये है कि मैं जब जुड़ जाता है उसके साथ में पैथेक लगता है, और माकेफ के साथ या बिना माकेफ के भी हो सकता है, लेकिन नॉन गटरल यानी जो गटरल नहीं है उनमें दागेश लगता है। We'll read and translate first sentence. Shana, how are you, beta? Fine, sir. तो Can you read? The first word, sir. First one, this one. Melek. Melek. Okay, who will translate? What meaning I told you about ma? What or King. how? What? What king? What? What king? What king? Then second one, who will read? Second one. Ma katao. Ma katao. Katao Yes. means writing Yes. or Who document. is writing? What Oh, writing? Okay. What writing or what document? Then third one, Ma nahar. Nahar. Nahar means a river. So what will be the translation? What river? What river? And last one, What about which and what you can't write? Which river or what? There's no which. patience, there is which. आगे आएगा. will be occasionally means how also, and what or how. So here in this context, we can translate it in what only. So in And- sorry. So ma is what, and ha is, what does that question indicate? Like the hey with the pathak that we Hey did the with first pathak time, means it's interrogative. sentence. For example, Shamar kept. If we put hey with pathak, Khatib pathak, Hash Shamar, has he not kept? Has he kept? So Okay, so it makes the sentence Sentence. interrogative. Yeah, interrogative sentence it makes. Kept, Okay, not. it doesn't indicate a question like how or Yeah, no, not what or that. which. Okay, Shamar means Okay. he kept. Her Shamar, has he kept? as in, Will he keep? okay. This ma, it introduces a sentence directly to ask a question with what or how. Okay, got it. Okay, last one, ma yom. Mayom. What day? What day? Here also ma regal. Ma ata. What about you? Ata means you. Regal means foot. What foot? Ma adir. How mighty. Ma hadawar. What words? What word?
Here I am not separated according to the workbook, the rule number 2C and 2.3. So that rule number 3C is preceding harsh guttural. So that is skipped from here, this PPT, but I have shown you in whiteboard. जो अभी हमने नियम देखे हैं व्हाइट बोर्ड पे जो समझाए थे उसमें से एक नियम यहाँ पर नहीं है, पर वो लागू होता जरूर है. It's guttural with comments. You have to use may. गटरल के साथ में जब कॉमेट्स होता है तो मे का इस्तेमाल किया जाएगा. Now, ashita is the word that means it is related to doing something or work. असीता यानी कि करने के लिए इस्तेमाल होता है. मे असीता मतलब क्या करते हो, क्या कर रहे हो. Can be used with makef or without makef. माकेफ के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, बिना माकेफ के भी इस्तेमाल हो सकता है. So, may ashita. What are you doing? You can ask question. मे असीता का मतलब क्या कर रहे हो, क्या करोगे, क्या Or किया. how are you doing? That also we can ask. या फिर कैसे हो, कैसे कर May रहे हो. haya. Next one is may haya. So may haya means haya is the word. It represents represents existence. So it is a verb. It represents verb also. हाया यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है मौजूदगी, तो ये यहाँ पर क्रियापद का भी काम देता है. Can be translated as how are you? May haya. यहाँ पर इसका मतलब कैसे हो, ये भी ट्रांसलेशन हो सकता है. Last one is may avoni. Can anyone translate this last one? May avoni. What is the meaning? What is the meaning of avoni? Avon. No one knows what is the meaning of avoni. What is my trespass? What is my iniquity? Avon means iniquity. यहाँ पर मतलब ये होगा कि मेरी खता क्या है, मेरी क्या गलती है. Okay. So in your workbook, lot of example for assignment is given. There are a lot of example given in assignments, so you can solve, and by practice you will come to know which rule you have to apply over there. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं आपकी एक्सरसाइज में. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यकीनन Article last time I told you to solve this 30. For interrogative here 15 example is given. आर्टिकल के लिए 30 उदाहरण दिए गए हैं शब्दों के, और सवालिया है के लिए 15 उदाहरण दिए गए हुए हैं. And 15 example is given, and tricky questions are 5. और ना के लिए भी 15 सवाल है, और आपकी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर 5 दिए गए हैं. D and E, you have to learn the rules and then you have to solve. Question D and E. सवाल नंबर डी और ई जो है इसके लिए आपको नियम बहुत अच्छी तरह से याद करने होंगे, तभी पहचान Remember, पाएंगे. and
read rules about the articles and answer these 5 questions. And then for question E, you have to read rules about the interrogative hai and answer these 4 questions. सी डी ई और एफ सबके लिए नियम अच्छी तरह 5 से याद questions. रखना बहुत जरूरी है. There is true and false also, and there are translations also. It is a big exercise, so you have to do it. For any query, you can refer to workbook or this recording, or you can ask me if you are unable to get any question. ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है और समझ ना आए तो ब्रदर को कॉल करके या मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं, अपनी परेशानी का हल मिल जाएगा. We're going to finish now, but before that, I just want to show you one slide. Okay, can you see? If you see at the red color marking, the word is Gishme Beraka. लाल रंग के चौकोर में जो लिखा गया शब्द है वो है गिश्मे बेराखा. In every year at the beginning, we do this for 40 days. We fast, not to change the mind of God, but that we may become humble, that I may become humble, and that I may come close to God. हर साल में हम लोग जब भी वास करते हैं वो इसलिए नहीं कि खुदा का मन बदल सके, लेकिन इसीलिए कि हम अपने आप में परिवर्तन लाके हम खुदा के और ज्यादा करीब जा सके. Because you know, according to John 2:15, 1 John 2:15, whatever things in this world is lust of the flesh, lust of the eyes, and lust of the pride of life. There are 3 things in the world. दुनिया में 3 चीजें हैं जो है Lust of eye, आंखों का लालच और जीविती का घमंड. So, for breaking these 3 things, we must come in a spirit being. We must connect with the spirit world. इन तीनों चीजों को तोड़ने के लिए हमको रूहानी दुनिया में आना बहुत जरूरी है. When we are weak in the flesh, we are strong in the spirit. जब हम अपने बदन से शरीर से कमजोर होते हैं तब हम अपनी आत्मा में मजबूत होते हैं. We know that Yahweh Elohim, that Ie Asher Ie dwells within our spirit. हम जानते हैं कि ये अशेर ये जो है हमारी आत्मा में रहता है. Because Bible says that spirit of Avi, that is father and of son, Yeshua, indwells in us. क्योंकि वचन कहता है कि खुदा बाप का और बेटा यीशुआ का रूह जो है हम में रहता है. So 2 years back, God gave me this burden, and some sisters along with my wife, they are continuing that through every day. They do this, and the name God suggested me is Sabal. 2 It's a साल Hebrew पहले word. ब्रदर को
2 साल पहले ब्रदर को ये प्रकटीकरण हुआ है, प्रकाशित हुआ है, और उस समय से इनकी वाइफ के साथ में कुछ और बहनें जुड़ करके रोजाना दुआ में याद करती हैं। So this word sabbal means burden, intercession with suffering. और ये जो नाम दिया उन्होंने वो है सैबाल, और सैबाल का मतलब होता है परेशानी और सारी दुख उठा करके किसी के लिए बिचवाई करना। And in the month of July, that is on 7th month, we fast for 7 days. Every year, in the month of July, we fast for 7 days. और इसीलिए साल में, हर साल के जुलाई महीने में हम 7 दिन के लिए उपवास करते हैं। The reason for that is there are 2 reasons. इसके पीछे 2 वजह हैं। First is for ourselves, that we may grow in the Lord, that we may have more communion or fellowship with Yeshua. सबसे पहला मकसद ये है कि हम खुदा में और बढ़े और खुदा के यीशुआ के साथ में हमारी और गहरी नजदीकी हो जाए। Secondly, to pray for you. और दूसरी बात है आप सबके लिए दुआ करने के लिए। Unless and until we are very close or connected with God, we cannot pray for others. जब तक हम खुदा के साथ में नजदीकी के साथ जुड़े ना हो तब तक हम दूसरों के लिए बिचवाई नहीं कर सकते, दुआ नहीं कर सकते। So every year God gives me theme of this fasting. हर साल फास्ट करने के समय खुदा थीम देता है ब्रदर को। Last time God gave me Kumi Ori. पिछली बार खुदा ने इनको थीम दिया था कुमी ओरी। Last January God gave me one thing, Echad. और ये हर बार एक चीज होती है, एखाद मतलब एक चीज। David asked that I want to see the beauty of Lord. दाऊद एक चीज पूछ रहा है खुदा से, कहता है कि मैं तेरी सुंदरता निहारना चाहता हूँ। And last few months, as I was reading this prophetic books, so God gave me this theme from Ezekiel 34 verse 26. और पिछले कुछ दिनों जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तब खुदा ने मुझे ये वचन दिया, इज़कियल का 34वां बाब और 26वीं आयत। Gishme Beraka, गिश्म बेराखा, showers of blessings. आशीषों की बारिश। And the showers of blessing will not come, as it is written in Hosea 10:12. Sow with a view to righteousness, reap in accordance with kindness. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord until he comes to rain righteousness on you. In Hindi it is given this. और होशे के 10वें बाब और 12वीं आयत में लिखा है, अपने लिए धन का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यावे के पीछे हो लेने का समय है। Unless and until you break up the fallow ground, you will not be able to, you will not become that ground which will receive the showers of blessings. जब तक तुम अपनी पड़ती भूमि को नहीं जोतोगे तब तक वो जमीन बारिश, आशीषों की बारिश लेने के लिए तैयार नहीं होगी। Because unknowingly there are so many rubbish and so many worldly things that are in our mind, and our ground should be required to be it requires to till. और हमारे जहन में अक्सर दुनियावी, इसीलिए जरूरत होती है कि हमारे हृदय का जो जमीन है हमारी वो जोती जाए। Because as you know that Yeshua is going to come very soon, and we need to prepare ourselves. क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि बहुत जल्दी यीशुआ का दूसरा आगमन होने वाला है और हमको उसके लिए तैयार होना है। If we will not break our fallow ground, that is our heart, our mind,
if it is not in line with word of God, we cannot be able to seek the Lord. अगर हमारी आत्मा खुदा के कलाम के साथ में एक लाइन में नहीं है तो हम खुदा को नहीं ले पाएंगे. First thing we have to do is to dig down deep. सबसे पहले हमको जरूरी है कि हम अपने दिल में गहराई में जाकर के खोदें, Introspect ourselves, अपने आप को जांचें, amend our ways, अपनी तरीकों को बदलें and repent for our conduct. और अपने गुनाहों के तरफ से पश्चाताप करें. Then only this ground, that is, it symbolically represents our heart, it will receive showers of blessings from our God. और तभी संभव है कि हम आशीष की हमारे ऊपर आशीष की वर्षा होगी. Here in Ezekiel 34:26 says, and I will make them and the places about my hill a blessing, and I will cause shower to come down in its season, there shall be showers of blessings. और यहाँ पर हिजकियेल के 34वें बाब और 26वीं आयत में लिखा है कि और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ों के आसपास का क्षेत्र आशीष का कारण बनाऊंगा और नियत ऋतु में वर्षा की आशीष की वर्षा होगी. There shall be showers of blessings. आशीष की बारिश होगी. You know, this song is sung during marriages. यहाँ हमारे यहाँ ये गाना गाया जाता है अक्सर शादी के समय पर. Yes, दुल्हा दुल्हन के the लिए. marriage supper of the Lamb is going to come. और भेड़ जो हमारे लिए चुनी हुई यीशुआ है उसके ब्याह का समय नजदीक आ रहा है और उसके दावत में हम भी शामिल So होंगे. what God revealed me through this verse is that Yeshua or Asher he himself is a showers of blessings. और खुदा के पाक रूह ने ब्रदर पे ये बात जाहिर कर दी कि यीशुआ खुद ही हमारे लिए आशीष की बारिश है. Yahweh Elohim, he himself is a showers of blessings. यावे एलोहिम खुद ही आशीष की वर्षा है. There are two category of people. First, people seeks the things from God. यहाँ पर हम जानते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जो खुदा से कुछ ना कुछ चाहते हैं. And one category is people who seek him only. और दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो खुद खुदा को चाहते हैं. If Yeshua is indwelling in you, अगर यीशुआ हमारे अंदर रहता है you will continuously experience the showers of blessings. Gishme Barak. तो हम लगातार इस आशीष की बारिश को महसूस कर सकते हैं, अर्थात गिश्मे बेराखा. Very big message around 7 point. I will not take you much time, but I will just come to point number yes. Yes, Hosea 6:3. Here it is written in point number 4. So let us press on to know the Lord, that is Yahweh. His going forth is as certain as a dawn, and he will come us like the rain, like a spring rain watering the earth. होशे के 6ठे बाब में और 3री आयत में लिखा है कि आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है. वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है. Do you want that he should come
on us like a rain, क्या आप चाहते कि वो हम पर एक बारिश की तरह आए, like a spring rain watering the earth? जैसे वो बारिश, ऋतु की बारिश जो जमीन को सींचती है? Because this word is trustworthy and true, for his going forth is as certain as dawn. क्योंकि ये जो है वचन बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह सच है, वो हमारे साथ में सूर्योदय की तरह रहेगा। Now the clue is here, so let us know, that is in Hebrew it is yadaiti or ladaat. Let us know, let us press on to know ye asher ye. हम जानने की कोशिश करते हैं ये अशेर ये को। यहाँ इसका शब्द है हिब्रू में यदाती। And if you put your heart to know him, you will experience showers of blessings. और अगर हम अपना मन लगाएंगे उसको जानने में, हम आशीष की बारिश को महसूस कर सकेंगे। He will give us former and latter rain in first month. वो हमको बारिश देगा और पहले ही महीने में बारिश देगा। Be glad then, you children of Zion, and rejoice in Yahweh your Elohim, for he hath given you former rain faithfully, and he will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain in first month. तो यहाँ पर योएल की किताब में लिखा गया है कि हमको खुश होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि सियोन के लोग, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। But I believe, as there was the glory in the days of Acts, in our days, in our generation, the glory of that church will be more greater than the days of the Act in these last days. जिस तरह से प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि जलाल उतर आया था, हमारा मानना है कि इन दिनों भी उस समय से कहीं ज्यादा जलाल प्रकट होगा। And we are going, our generation is going to experience that glory in our midst. और हमारी पीढ़ी जो इस समय चल रही है, वो उस जलाल को हमारे बीच महसूस करेगी। It is the outpouring of the Holy Spirit. और ये पाक रूह का हमारे ऊपर बारिश होने का मतलब है। Former rain and the latter rain in the first month. पहली बारिश और आखिरी बारिश उस महीने की, पहले महीने की। Very long message. I will end here by this word in Revelation 19:6 and 9, 6 to 9. For it is written here that the wedding of the Lamb has come and the bride has made herself ready. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 19वें बाब में वचन नंबर 6 और 9 में, फिर मैंने मानो एक विशाल जन समूह की आवाज तथा समुद्र की लहरों। 7th verse you read, sister. Only 7? Okay. आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। Who is his bride? कौन है उसकी दुल्हन? We are his bride. हम उसकी दुल्हन हैं। And bride has made herself ready. और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। So, first thing is that we must follow our ground. और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जमीन को जोतें। Then we will receive the showers of blessings. तब हमको आशीष की वर्षा मिलेगी। And the one who gives showers of blessing is he himself. और जो हमको आशीष की बारिश देता है वो खुद ही आशीष की बारिश है। The most powerful name, Ye Asher Ye. सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर नाम है ये अशेर ये। And we are going to experience in our generation the former and latter rain in a first month.
और हम अपनी पीढ़ी में सबसे पहले महीने में पहली और आखिरी बारिश को भी महसूस करेंगे. Reason is the wedding of the lamb has come and bride has made herself ready. वजह है कि मेमने का ब्याह नजदीक आ रहा है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. 8th verse says, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous act of God's holy people. और 8वीं आयत में लिखा है कि उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया है, और ये मलमल तो संतों के धार्मिकता के कार्य है. Yes, Yahweh Elohim bless you. If you are having any prayer request, please send. Or if you want to join this 7 days fasting, you can join. Or if you want only join prayer, you can join, and you can send us prayer request, and we'll pray for you. Thank you. सभी को आमंत्रण देते हैं कि आप हमारे साथ इस 7 दिन के फास्ट एंड प्रे में जुड़ सकते हैं. जो चाहे उपवास करें तो कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ प्रेयर में भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं. वरना अपनी अपनी परेशानी हमको मैसेज में लिख कर भेजिए, हम आपके लिए प्रेयर जरूर करेंगे. This time I request Sister Kaylin to please pray for end the session with prayer. Dear Lord, thank you for your special blessings on us and for this class. I pray that you will give us each time to learn it, as well as understanding. Please help Raul and everyone involved with the fast to be true, and for you to sustain them in this difficult task of drawing closer with this fasting. We know that you are sovereign, and pray for your sovereignty to rule and reign in each one of our lives, and that your